So previously हमें lecture number 1 रे already discussion करथले. So जो माने भी previous class तो जदि attend करना so easily तमे video देखि पारे मु already YouTube channel रे upload कर देछि. So previously हमें discussion करथले different तमरा physical quantities and fundamental quantities. The basic fundamental quantities. You have 7 basic fundamental quantities. 7 basic fundamental quantities are there. 7 basic fundamental quantities are there. कौन सा जाएगा? Length, mass, electric current, time, temperature, luminous intensity, amount of substance, and दीटा तमरा supplementary quantity थिला plane angle and solid angle. So in details एवढा का discussion करियानी already chapter number माने lecture number 1 रे हम already discussion करचे. Then derived quantities कौन तार definition and few examples of derived quantities. तासता हम किसी definition देखितले what is तमरा distance, displacement and speed, velocity, acceleration विषय पे हमें definition तार already previously हमें देखी है. So then in today's class we'll discuss discussion करेगा dimensions and dimensional formulae of physical quantities. So physical quantity रो dimensional formula कौन and dimensional analysis and we'll solve some problems. So what is dimensional formula? So dimensional formula of a derived physical quantity. So dimensional formula हमें गुडे derived quantity रो बाहर करिबा. So basic fundamental quantity रो हमें dimensional formula किछि बाहर करिबा दरकार नाही. So basic formula जोड़ा रहिला basic fundamental quantity तमर जोड़ा रहउची जिनकी से quantity ऊपर से क्वांटिटी डिफाइन करलाडू आउ किछि अदर क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करिया को पड़िबो नाही. सेडा होची फंडामेंटल क्वांटिटी लाइक योर मास, लेंथ एउडा को जतला हम डिफाइन करबा बा ताको मेंशन करबा और ताको हम यदि को जाय रे भी डिफाइन करबा कहले सेडा हमें ताको अलगा वैल्यू ऊपर अलगा पैरामीटर ऊपर अलगा मेजरमेंट ऊपर डिपेंड करिया को पड़िबो नाही. अलगा क्वांटिटी ऊपर डिपेंड करिया पड़िबोनी. सेडा होची बेसिक क्वांटिटी. Length, mass, these are your basic quantity. So derived quantity कोड़ा जो derived quantity माने basic quantity रू derive कराई दियो. Okay, basic quantity रू नहीं री derive कराई दियो. That is your derived quantity. So derived quantity रही हमें dimensional formula बाहर करेगा and dimensional formula बाहर करे से तम किसी numerical problems भी हमें solution करेगा. So what is dimensional formula? So dimensional formula of a derived physical quantity is the expression showing powers to which different fundamental units are raised. माने जो physical quantity हमें नहीं थीबा वो quantity ला derived quantity हमें जोड़ा नहीं थीबा that derived quantity is link with किन से link है जी का सही तो ना basic fundamental quantity से तो link है. So जो basic fundamental quantity से तो link है जी so से तारा कहते को टाइप रो लिंक है को बेसिक क्वांटिटी नेगरी फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव है एंड तार पावर ऊपर हमें एक्सप्रेस करबा सेटा होची डायमेंशनल फार्मूला. सो क्लियर आउरी बुझिबो जेतल हम एग्जांपल देबे आउरी बुझिया प्रॉपर्ली. सो क्वांटिटीज कोन कोन लेंथ, मास जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी अछि, टाइम, टेंपरेचर, करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. सो लेंथ को हमें एल रे डिनोट करबा एल रे डिनोट करबा डायमेंशनल फार्मूला पे डायमेंशन पे, मास को एम रे डिनोट करबा एंड टाइम को टी रे, टेंपरेचर को के रे, करंट को आई रे, लुमिनस इंटेंसिटी सी डी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल रे में डिनोट करबा. सो most of the quantities can be expressed with the term MLT. M that is mass, length and time रे हमें maximum quantity को easily express करि परिबा. So what a simple example दो देखो. So example हम रोचे simple example हैला जे volume. So volume जहाँ भी हमें quantity हमें express करिया volume हैला, acceleration हैला, force, energy, work, power जहाँ भी रोचे ताकू हमें always तारा basic fundamental formula कौन देखिबा and ताकू यूज करिया हमें basic तारा
यूनिट्स लिखिरी बा बेसिक तार डायमेंशन दे इजीली हमें लिखि परिबा तार बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स गुडाको बा फंडामेंटल बा तमर को डायमेंशनल फार्मूला इजीली मेंशन करि परिबा सो वॉल्यूम कोन ऑलरेडी हमें प्रीवियसली इन योर क्लास 6 7 8 9 रे भी तुम ऑलरेडी पढ़िछ वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट सो तीनटा जगह मल्टीप्लाई कले हे दियो वॉल्यूम सपोज उडे आमे गोटे शेप नहीं दिबा एबडा मन गोटे शेप अछि सो आर लेंथ ब्रेथ आउ हाइट जदि नबा इन दैट केस रे आमे सेडा को तार वॉल्यूम बाहर करिया ओके वॉल्यूम बाहर करि परबा सो लेंथ दिस इज योर height एटा होची breadth so length breadth and height तीनटा जाको मल्टीप्लाई कला हे जो हमरा वॉल्यूम so this is equal to length का हमें डिनोट करबा l रे ठीक अछि l रे हमें डिनोट करबा लेंथ को breadth is also one type of length breadth रे भी लेंथ आगा l and height ता भी हमें मेजर करया काहे रे लेंथ रे आगा मेजर करबा ओडा लेंथ l so l into l l q so here l q हेला एंड एडी आमे सबोले आमे डिनोट करिया प्राय mlt रे आमे डिनोट करिया मास तो एडी नाही लेंथ अछि ऑलरेडी आमे मेंशन कर देले आउ टी टाइम भी नाही वॉल्यूम भितरे टाइम अछि कि वॉल्यूम रो फार्मूला रे टाइम किछि नाही सो वॉल्यूम पय हेला डायमेंशनल फार्मूला फॉर वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट l into l into l दैट इज lq सो वॉल्यूम हेला तमरो m0 मास किछि नाही m0 सो lq लेंथ थिला lq into तमरा t0 ओके t0 सो mlt मास लेंथ टाइम रे ही मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी इजीली हमें एक्सप्रेस करि परिबा सो दिस इज इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम रे तमे 2 to 5 मार्क्स बा 7 मार्क्स पाई परिबो ए लेक्चर ओके लेक्चर नंबर 2 रु निहे तमे अराउंड 2 to 7 मार्क्स बा 2 to 10 मार्क्स इजीली पाई परिबो सेमेस्टर एग्जाम रे देखिबा को मिलिबो सो ओके बुझियला सो एडी आमे आरो डायमेंशनल तारो डायमेंशन जगह पावर उडा जे देखिबा 0 3 एंड 0 mlt रो पावर उडा होची 0 3 0 सो 0 3 0 दीज आर डायमेंशंस 0 पावर उडा जोडा लेखा होची 0 3 0 दीज आर योर डायमेंशन उडा dimensional formula goda this is a dimensional formula m0 l3 and t0 it is a dimensional formula and dimensional equation kana v volume equal to m0 l3 t0 v equal to lhs equal to rhs term रे जदि लिखा है that is your dimensional formula में कहि परिबा ठीक अछि सिमिलरली हमें जीवा एक्सीलरेशन कोन एक्सीलरेशन होची वेलोसिटी बाय टाइम सो प्रीवियस क्लास रे बा प्रीवियस लेक्चर रे ऑलरेडी मु वेलोसिटी विषय कहि छी अगेन मु जस्ट क्विकली रिपीट कर दोची सो दैट इट विल क्लियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट मोर प्रॉपर्ली सो डिस्टेंस कोन आउ डिस्प्लेसमेंट कोन देखिबा डिस्टेंस होची दी लेंथ बिटवीन टू पॉइंट दीटा पॉइंट भितरे लेंथ हेला डिस्टेंस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी भितरे डिस्टेंस लेंथ केते दैट इज कॉल्ड योर डिस्टेंस एंड इन मीटर डिस्टेंस हम मीटर मेजर करबा एंड तमरा डिस्प्लेसमेंट कोन डिस्प्लेसमेंट होची the shortest distance between the 2 points so clearly move with examples with calculations sahit mu lecture number 1 already kahichi so lecture number 1 tame dekhi pariba so that properly bujhi pariba so displacement hochi shortest distance ta hochi displacement me amaku measure kariba meter re distance ta ode length ra ode and similarly then hochi speed kono speed hochi speed tame गाड़ी चलाउछो जानिछो किलोमीटर पर आवर केते स्पीड तमे जाउछो कहले गाड़ी रे तमे देखि परछो तमर देखो छी स्पीडोमीटर रे केते किलोमीटर पर आवर में डिस्टेंस बाय टाइम हेला स्पीड सिमिलरली वेलोसिटी होची वेलोसिटी v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम
displacement by time. So displacement by time is velocity. Okay. Then acceleration gonna acceleration hochi rate of change of velocity, that is velocity by time jodi kardaba, that is your acceleration. So this is equal to acceleration mane velocity by time, again velocity mane kono displacement by time divided by time. So this is equal to distance by displacement by time ro square. Okay, so now एबे देखो इजीली बुझ पारिबो एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम. सो वेलोसिटी अगेन कोन ना वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट आउट लेंथ रा, सो L1 एंड डिवाइड बाय t तळे कोन t1 टाइम. सो आपको हमें लिखिबा दिस इज इक्वल टू L1 पावर 1 आउ t डा ऊपर गले t डा -1 है जो t -1. So this is the dimensional formula for velocity. So acceleration जेतु velocity upon time, velocity by कौन time. So velocity है केते ना L1 t -1 L1 t -1 divided by कौन t divided by t. So एडा में लिखिबा divided by t हेबो एडा क्लियरली लिखि पारिया L1 तो ऑलरेडी अछि एंड t -1 थिला ए t डा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो t थिला सेटा भी ऊपर जाई कोन -1 एरी केते हिला t रो -2 t -2. सो ए जगह मास रो किछि वैल्यू नाही, माने मास किछि मेंशन करा है नै फार्मूला रे. एक्सीलरेशन रो डेफिनेशन रे बा एक्सीलरेशन रो फार्मूला है, मास रो किछि मीनिंग ही नाही. सो m0, so m0 L1 t -2, this is the formula for acceleration, that is m0 L1 t -2. Here the dimensions are 0, 1 and -2 are the dimensions, and this is the dimensional formula for acceleration. Similarly momentum. So properly जेतला में जेकोनसी क्वांटिटी रो डायमेंशन बाहर करिबा, you don't have to remember these formulas individually. formula उडा को मन रखबा दरकार नाही. सो तमो कोन करिया पड़ियो ना से क्वांटिटी रो fundamental formula को जिबा पड़ियो, so that you can easily derive these dimensional formulas. For momentum कोन ना mass into velocity. So mass into velocity, already velocity रा में dimension बाहर कर जे, that is L1 t -1 and mass. So m1 into velocity केता हो L1 and t -1. So m1 L1 t -1 for momentum. Similarly आमे दिबा force रो unit, force हैला केते mass into acceleration. Already acceleration रा में dimension formula बाहर करचे m0 L1 t -1 and here we multiply mass m1. So एडी केते जिवो m1 L1 t -2. Similarly moment of force, that is force into distance. So already force रे बाहर करचे m1 L1 t -2 into distance. Distance कोन L1 L square है जिवो. So m1 L2 and t -2. And then formula for work, dimensional formula for work, force into distance. Already force रा अछि into distance. So m1 L1 t -2 into distance कोन L1. m1 L2 t -2 is for formula for your work. Similarly kinetic energy, potential energy रे भी हम इजीली डिराइव करि परिबा. देखो kinetic energy हिला half mv square. M is a mass and v is a velocity. So velocity रेडी स्क्वायर ने अछि, देख परिबा velocity रो कोन स्क्वायर अछि. देखो okay, so half जो अछि 1/2, this is a number. So number रो किछि डायमेंशन रहइबो नाही. So ignore because it is dimensionless. किछि नंबर उडा रो डायमेंशन रहइबो नाही नंबर. okay, so dimension किछि रहइबो नाही and आमे लिखिबा mass into velocity रो स्क्वायर. mass into velocity रो स्क्वायर. already velocity आमे जानचे L1 t -1. so m1 mass into velocity रो स्क्वायर. so velocity टा केते L1 t -1 आरो कोन स्क्वायर. so this is equal to m1 and okay m1
into एटा केते हला L रो 2 ओके L2 and T रो कोन -1 into 2 that is -2 so एटा को हमें इजीली लिखि परिबा M1 L2 T minus 2 this is a formula for kinetic energy now potential energy kete mgh m hochi mass g is the acceleration due to gravity and h is the height or length mgh mass into acceleration into h height जो मसला भी सुन दियो mdh मसला ली से टाइप रे डाउट mgh चली मन रखो ओके पोटेंशियल एनर्जी हिला mgh m into g into h mgh so एडा देखो mgh so mass into g कोन acceleration due to gravity so mass into acceleration due to gravity acceleration हम लिखि पारिया velocity by time into कोन h is height okay height would length so this is equal to mass is m capital m1 लिखि पारिया mass को and velocity by time so velocity रो already हम जाना छी L1 t minus 1 so L1 t minus 1 this is your velocity by time by t1 into height कोन L1 so this is equal to m1 into a t minus 1 अच्छा ऊपर पड़े कोन हो minus 2 okay L1 t केते t minus 2 हिला into L1 एडी already थिला आउडे L1 डा so L1 so this is equal to m1 L केतरा दीटा अछि L1 so L2 and t minus 2 so this is a dimensional formula for potential energy ए जगह रे ओडे जिंस ऑब्जर्व करि परिबो काइनेटिक एनर्जी रो डायमेंशनल फार्मूला जहां पोटेंशियल एनर्जी रो भी डायमेंशनल फार्मूला से काई ना दीज आर योर एनर्जी एंड एनर्जी माने कोन जहां भी तमरा एनर्जी रहइबो तार डायमेंशनल फार्मूला सेम ही रहइबो दैट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला सो डायमेंशनल एनालिसिस विषय में डिटेल्स डिस्कशन करबा नेक्स्ट सो बिफोर दैट हमें जानिया पड़ियो उडे प्रिंसिपल उडे कांसेप्ट जे लर्न करबो that is your principle of homogeneity exam रे 2 मार्क्स रो क्वेश्चन आसी पारे principle of homogeneity so principle of homogeneity कोन को देखो it states that the dimensional formula of every term on both sides of a correct relation must be same okay so dimensional formula of each term देखो मैं एटा डिवाइड कर दोची स्प्लिट कर दोची सो दैट प्रॉपर्ली बुझी परिबो it states that dimensional formula of each term on both sides of a correct relation must be same गोटे करेक्ट रिलेशन जदी दिया आइची गोटे फार्मूला जदी दिया आइची फिजिकल क्वांटिटी रो देन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहूछ जे जो टर्म डा अछि ईच टर्म इन डिटेल हम एग्जांपल दबा बुझिबो क्लियरली सेतला मात्र कहि देबी ईच टर्म रो फॉर एग्जांपल एबे गोटे लिखु जे a इक्वल टू मनर लिखाइ छी a इक्वल टू b प्लस c सपोज गोटे किछि गोटे फिजिकल क्वांटिटी रो फार्मूला एबडा किछि लिखाइ छी so in that case कोन हबो each term that is left side और right side देखि परिबा LHS side रो and RHS side रो LHS and RHS side रो each term माने LHS side रे A अछि आ RHS side रे कोन अछि B अछि और C अछि so each term रो A रो B रो C रो each term रो dimension formula must be same that is called principle of homogeneity और हमें कहि परिबा the dimensions of each of the terms of a dimensional equation on both sides should be the same रहइबा दरकार dimension formula रा both side रे dimension same जदी रहइबा that equation we can say that is a correct equation dimensional as per principle of homogeneity okay so principle of homogeneity बुझिला dimensional formula is
used by dimensional analysis application विषय में डिस्कशन करिवा. It can be used to convert the value of a physical quantity from one system to another system. System विषय में already previously कही छी MKS, CGS, okay, different system विषय already कही छी. So गोटे सिस्टम रे आउट सिस्टम का हमें कन्वर्ट करबा. गोटे सिंपल एग्जांपल एडी दिया छै. सो हमें डिस्कशन करबा. दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ए अगर हमें कांसेप्ट यूज करबा, दिस इज अ कांसेप्ट. कांसेप्ट कोन ना दीटा में फिजिकल क्वांटिटी रो सेम फिजिकल क्वांटिटी रो दीटा सिस्टम रे हमें ताको मेंशन करि परिबा. सो सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2. So both the system same actually कहीं ना quantity तो same ना, से quantity same है. For example मु कहिबे simple example मु कहि पारे गोटे छोटी example देबे. मनर होची 2 kg जहा 2 kg जहा 2 kg जहा 2000 ग्राम से ना नहीं से ही only different कोन ना different होची this number. Okay, this number is the different. एडी 2 जगह एडी 2000 लिखाई जी. ओनली दिस इज द डिफरेंट. अदरवाइज दिस टू क्वांटिटी आर रिमेन सेम. कहीं सेम ही रहबो गोटे सेम क्वांटिटी टा. ओनली अलगा मेंशन कराई जी, अलगा सिस्टम रे लिखाई जी. एटा केजी रे लिखाई जी, एटा ग्राम रे लिखाई जी. एती खाली डिफरेंट बुझिला. सो एडी दिस सिस्टम सेम रहबो. दैट इज दिस सिस्टम मस्ट बी सेम. दैट इज M1 L1 T1, M2 L2 T2, ABC are these ABC are the dimension value power उड़ागो M0. okay, M0 जिने M0 L1 okay, T-2 जिन लिखा होतला से जो पावर उड़ागो ची ABC M1 L1 T1, M2 L2 T2. These are system 1 by 1 stand for system 1, 2 stand for system 2, second system. So M1 L1 T1, M2 L2 T2, ABC रहिला पावर रहिला. N1 कोन तार नंबर टा, N2 टा होची नंबर फॉर सेकंड सिस्टम. सो गोटे सिस्टम हम बखर ऑलरेडी जणा अछि ताको हम सेकंड सिस्टम रा कन्वर्ट करबा. सो सेकंड सिस्टम जतला कन्वर्ट करबा फार्मूला में लिखिबा N2 equal to N1, okay, N1 into M1 by M2 power A, okay, L1 by L2 power B, T1 by T2 power C, where M1, M2, L1, L2, T1, T2 are values for mass, length and time, and ABC are dimensions. Okay, dimensions. Okay. Now good example now हमें convert a work of 5 joule to 5 joule in org. So 5 joule in org. 5 joule actually MKS system रे दिया है ताको हमें convert करिबा हमें CGS system रे हमें convert करिबा. MKS mass kilogram second, mass, okay, mass okay, इडा MLT रे हमें लिखा होची mass, length out time. So mass, length, time. This M is not mass. M डाउची कोन ना मीटर, किलोग्राम, मीटर केजी सेकंड, मीटर केजी and second. This C is centimeter, ग्राम सेकंड. So मीटर को सेंटीमीटर रे कन्वर्ट कराय छी, केजी को ग्राम रे एंड सेकंड को सेकंड रे एज इट इज रखाय छी. सेडा हमो कन्वर्ट करिया पड़िबो. So first step is तमो जानिया पड़ियो जेतुडा वर्क रो डायमेंशनल फार्मूला केते. सो प्रीवियसली ऑलरेडी हमें वर्क रो डायमेंशन हमें ऑलरेडी बाहर करछे. डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क इज M1 L2 T minus 2, M1 L2 T minus 2, M1 L2 T minus 2. So M1 L2 T minus 2. So easily A B C जानि परिबा. A केते 1, B केते 2, C केते -2. एटा फर्स्ट स्टेप बुझियला. ओके, सो बुझियला.
सो सिस्टम 1 रे सेकंड स्टेप कोन सिस्टम 1 रे हम लिखबे एमकेएस वैल्यू गुडा ऑलरेडी देछि ए दे देखो 5 देछि ओके 5 जूल रु केते अर्घ बोले पचाछि केते हबो केते अर्घ बोले पचाछि वर्क रे यूनिट जूल बा अर्घ रे भी लिखि परिबा सो 5 जूल ठीक अछि 5 जूल ए जगह रे 5 देन कोन जूल सो जूल को हमें एमएलटी रे हमें मेंशन करि परिबा एंड सिमिलरली सेडा नेक्स्ट केते वैल्यू ओके इनटू कोन अर्ग माने तार यूनिट केते अर्ग अरे यूनिट कोन यूनिट जूल रे एडा यूनिट अर्ग रे सो ओनली नंबर केते दिस इज n1 नंबर 1 n2 केते हबो n2 हमें कैलकुलेट करि परिबा इजीली ओके सो m1 l1 t1 and n1 so for one value हमें नबा इजीली one value नबा so mass का हमने 1 kg and length को नेले 1 meter and time को नेले 1 second कहना mk system रे that is your meter kilogram and second meter kilogram and second so 1 meter 1 kilogram 1 second लो आउ नंबर टा केते अछि 5 is a number 5 होची नंबर नेक्स्ट टाइम सिस्टम नंबर 2 रे m2 l2 t2 सो ग्राम सेंटीमीटर सेकंड एडा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड ही नबा ना व्हाट इज n2 डा केते हम सेडा कैलकुलेट करिया पड़िबो सेडा ही कैलकुलेट करिया कहि छिए n2 रे वैल्यू केते हबो नंबर टा केते हबो जेन की ଗୋଟେ छोटा एग्जांपल मु देइथि ऑलरेडी जे 2 kg इक्वल टू केते 2000 ग्राम 2000 ग्राम केजी टू ग्राम रे हमें इजीली कन्वर्ट करि परिबा इजीली सो दुई जगह केते 2000 लिखा अछि एतिया डिफरेंट एटा केते होल 85 सिमिलरली जूल टू अर्ग 85 सो 5 जूल टू केते अर्ग बोले 85 बुझिला सो नाउ हमें एज पर द फार्मूला यू कैन इजीली कैलकुलेट सो ए फार्मूला हमें लिखिया कथा n2 रे वैल्यू नंबर टा केते होल 85 सो दिस इज इक्वल टू n1 केते 5 इनटू ओके 5 इंटू m1 केते m1 होची 1 kg ओके सो 1 kg डिवाइड बाय m2 केते m2 होची 1 ग्राम एंड आर पावर केते पावर होची a इज अ पावर a रे वैल्यू केते 1 सो 1 ओके आ कोन रहला l1 बाय l1 होची 1 मीटर सो 1 मीटर बाय सेकंड रे केते 1 सेंटीमीटर ओके 1 सेंटीमीटर एंड बी डा केते बी रे पावर देखि पारे तमे बी डा केते बी डा 2 अछि बी डा केते 2 आउ कोन रहला आउ t1 सो t1 डा ऑलरेडी केते 1 सेकंड रे ओके 1 सेकंड सो एडी देला केते ना 1 सेकंड बाय केते बाय 1 सेकंड आर पावर केते रहला a b c डा c केते -2 दिस इज -2 ना वाको हम सॉल्यूशन कला हम आंसर आइ दियो पाइ दियो सो 5 इनटू ओके 1 kg तळे ग्राम अछि सो सेम रे हमें लिखिया पड़िबो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यू रहया दरकार सो ग्राम तो अछि ऑलरेडी सो ऊपर kg डा ग्राम रे कन्वर्ट कर दवा सो 1 kg हो जे केते 1000 ग्राम सो 1000 ग्राम बाय ग्राम सो ग्राम कटिला यूनिट कटिला सेम यूनिट ता रखिले कटियो यूनिट न कटियो केवल कटियो नहीं ग्राम कटिला एंड पावर केते अछि पावर 1 अछि इनटू केतेला 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर सो 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर सो सेंटीमीटर कटिला पावर केते 2 रेला किंतु 1 सेकंड तो सेम अछि कटिला सो सम वैल्यू रे पावर -2 1 रो पावर -2 माने 1 आगे किछ नै ओके सो दिस इज इक्वल टू एडी केतेला 1000 रे पावर 1 so 5 into 1000 रे पावर 1 1000 आगा into 100 100 रे पावर 2 100 स्क्वायर सो स्क्वायर अछि सो दीटा शून्य और पड़ जिबेडी चारटा शून्य रहला चारटा एडी तीनटा केते सातटा शून्य रहला सो 5 into 10 to the power 7 5 into 10 to the power 7 or ERG is the correct answer 5 joule equal to 5 into 10 to the power 7 ERG or that is 1 joule equal to
10 to the power 7 org. Okay, 1 into 10 to the power 7 org. बुझिए थी वो. Then हमें correctness check करी परिवा. To check the correctness, another application of dimensional formula or dimensional analysis out of important exam point of view, very very important. Check the correctness of the given relation. So the relation is equal to ut plus half at square. So आपको हमें check करिए whether this given expression is correct or not. So ये अगर हमें principle of homogeneity equation use करिवा, in that case रे कौन को इतला each term रो LHS and RHS रो both side रो each term रो dimension must be same हवा दरकार. So given relation, how to write it in your exam रे कोगुला express करिवा proper लिखिवा. So given relation is S equal to ut plus half d square. Now dimensional formula of S टा कोंडा displacement टा. So displacement कहले L1 रहला, ठीक अछि. L1 रहला कहले m0 L1 t0 mass और length किछि नाही एडी, mass and time किछि नाही, length है खाली अछि. Okay, second रहला dimensional formula for ut. Okay, half ut square. Okay, half ut अछि. So ut रा term रा अछि. Okay, half right side देखि पारियो ut अछि और half at square. हां, ut plus half at square. So u into t रे हम देखिबा u कोन initial velocity, u होची velocity by initial velocity. So velocity रो dimension हम ऑलरेडी जानि छ, प्रीवियसली हम बहुत ऑलरेडी कहि साची m0 l1 t minus 1 into time केते t1 into time केते हला t1. So m0 l1 t0. Okay, बुझियला काइना t minus 1 into t रो 1 0 हिला, t रे पावर केते 0 हिला. Dimension formula for half at square. Half रो किछि dimension रहबा नै. This is dimensionless number टा at square. एडा कोन acceleration into time रो square. Acceleration भी हम जणा छी m0 l1 t minus 2. Otherwise acceleration कोन ना velocity by time. So velocity रो केते m0 l1 t minus 1 by कोन time. So t केते हो t minus 2. Acceleration ना केते ला m0 l1 t minus 2 into time रो square. So t2. Now t2 and t minus 2 कटिला केते 0 हिला. So m0 l1 t0. Now तीनटा जागो एक्सप्रेशन रो 1 2 3 तीनटा जागो एक्सप्रेशन रो डायमेंशनल फार्मूला सेम अछि. m0 l1 t0 m0 l1 t0 m0 l1 t0. So that is why this given equation is a dimensional. Given dimensional equation is dimensionally correct. Okay, from the above equation we get dimensional formula of every term are same. Therefore, according to principle of homogeneity, the given relation is dimensionally correct. Otherwise, यदि अलग अलग आस्तांता, in that case तमे लिखितांता the given dimensional equation is incorrect. Okay, so आउ किछि तमो इक्वेशन देछि. सो तमे नेजे ट्राई करि पारिबा सॉल्यूशन करया पई. सिमिलर टू v equal to u plus 80, v square equal to v square minus u square is equal to 4s, and t equal to 2 pi into g by l. L is the length, g the acceleration due to gravity, and f equal to force equal to mv square by r. M is the mass, v is the velocity square, and r is the radius. Radius टा कोन length हैगा, and तळे जो एडी l अछि एडा भी length अछि. So try to solve these 4 questions. Number 2, number 3, number 4, and number 5. Already हम first डा express करली बुझेली clearly. So try to solve these questions. If we have doubt, we can discuss in our next class. Thank you.